अरे का होगल साला एक ही बार बारी ट्रैक कमरा पे जाते कहाँ गल किसन हो। 그치가 बैठ का रुक 15 मिनट सेकंड पीछे न लगल भाई। यश छल्ला का ऊपर से छुला नहीं यार जात ली तब से हथवा से हिल गला सलाई। ऊपर से ना
उल्टी आएगा कहाँ से देखा थोड़ा। तो ठीक। कैसा उतरा ये हल्का सा slow। चलो ठीक। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। ठीक है अपन कहीं जाता होगा अपन गिरे छोड़ दा 340 में लगा फाटा था। एक हल्का सा जूम में दा हल्का सा। बस चलो। हवाले मोबाइल हमारा लिखा जूम में पूरा डिस्प्ले ना दिखाई। हाँ पूरा ब्लैक बोर्ड में दिखाई। अरे में छोटा करना छोड़ होगा। ब्लर में कहाँ से क्या क्वालिटियाँ देखा था। क्वालिटी ठीक हो। चैटवा चालू है।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी इस समय ठीक ठाक होंगे। मैं अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाइव आ रहा हूँ। 2-3 दिनों तक लाइट की समस्या थी और आज भी नेटवर्क की समस्या होने के कारण हम प्रयासरत थे, जिसके कारण अभी मैं 20 मिनट लेट आपके बीच में पहुंच रहा हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है इन बायोलॉजी। पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरा जो प्रोग्राम है हाउ टू क्रैक नीट प्लेटफॉर्म या हाउ टू obtain your aim in NEET with me. I am starting my chapter wise analysis in physics, chemistry and in biology. I will provide you glimpse of every chapter, and after completing that chapter we will solve MCQs. So friends, be prepared and make your life in planned way, because my procedure is to how to crack your NEET, and the duration of my program is of 2 years. So friends, in my previous lecture I have provided my topic biological classification of organism, and first method was two kingdom classification. In this method of classification of organism of two kingdom classification, all the organism of the world have been divided. All the organism of world have been divided into two kingdoms named Animalia and Plantae. This system of classification of organism was in vogue since the days of Arastu and Theophrastus, but was formalized in 1735 by Linnaeus, and to Linnaeus we called as father of taxonomy or father of classification. You know that taxonomy is the branch of biology in which we study the method of procedure of classifications of organism according to the similarity and dissimilarity of their characters. So the two kingdom method of classification. In this method, organisms are creatures are classified into two major groups. Number one is Plantae and second is Animalia. Friends, we have seen in my previous video the characteristics of members of Plantae and members of Animalia. So we study in glimpse the characteristics of members of kingdom Plantae. The members of kingdom Plantae are irregular
in shape or in outline, and asymmetry is generally absent because plants have no definite shape. Because so many branches are evolved and there is a variability in their morphology due to different shapes of single species of plant. It is because of the presence of branches. The pattern of emerging of branches on the stems are differ, so the different members of a special species of plants are not alike, so plants are differ in their form. Various organs of the body are external. Organs of the body in plants are leaves, flowers, and fruit. The next characteristic is in plant growth continues throughout the life. फ्रेंड्स, पौधों में जो वृद्धि होती है वो थ्रू आउट क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है, होती रहती है. ग्रोथ इज जनरली अनलिमिटेड and is due to presence of definite growing points called meristems. You know that meristems are the special types of tissues which have the enormous property of dividing the cells throughout the life. प्लांट्स में पाए जाने वाले कोशिकाओं के वो ग्रुप या group of cells. In other word, group of cells is called as tissue, and word tissue was coined by Becquerel. So group of cells which are similar in structure and function. कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी रचना और जिनकी उत्पत्ति ओरिजिन और जिनका कार्य क्या होता है? एक जैसा होता है. द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इन ओरिजिन एंड इन फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज. एंड इन प्लांट्स देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच हैव द प्रॉपर्टी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ. एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड at the apex of root and shoot, and also on the stem from where branches are emerged from the stems. And in the internal anatomy of the plant there are the lateral meristems by which secondary growth in plants taking place. जो lateral meristem है, जो पार्श्व विभजोतक है, जो प्लांट्स के स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है, जो कार्क कैम्बियम है. कार्क कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, जिसके कारण प्लांट्स क्या करता है? मोटाई में बढ़ता है. इंक्रीज इन इट्स थिकनेस. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. एंड ऑन द स्टेम वेयर इन nodes are present. On the point of nodes, there are special type of meristematic tissues which is called as intercalary meristem or अंतर्विष्ट विभजोतक. By intercalary meristems, branches are evolved on the stems. So growth in plant occurs throughout the life, and growth is generally unlimited and not is found in equally at all places in body of plants. It is only at the tip of root and shoot, or in other word you can call that at the apex point, apex of the shoot and apex of the root. The special type of tissues which are called apical meristem, due to division in apical meristem
the growth of shoot and roots increases. Next property in plants is locomotion. Plants are fixed except for some microscopic forms. The organisms are divided into two groups, Plantae and Animalia, on the basis of a structure of cells, because the plant cells contain outermost envelope that is called cell wall. In green plant, the cell wall is composed by cellulose, and in fungus, the cell wall is composed by chitin. But in the case of bacteria, outermost covering up body of the bacteria is called cell wall, that is formed by peptidoglycan, teichoic acid, and muramic acid. Friends, this is very important point. You understand and you learn what are the compositions of different groups of organisms. Plants, cell wall. In plant, cell wall is composed by cellulose. In fungus, cell wall is composed by chitin, and in bacteria, it is composed by peptidoglycan, teichoic acid, and muramic acid. Friends, we were studying about locomotion in plants. Plants are fixed except for some microscopic form. So friends, bacteria is also a member of kingdom Plantae. According to Theophrastus and Aristotle, because at the time of Theophrastus and Aristotle, the detailed study of cell was undiscovered. So Theophrastus and Aristotle divided the organism into these two groups, Plantae and Animalia. After all the cell was discovered and its structure was known, then the further classification of organism was done into 5 groups and 3 groups and 6 groups and 7 groups. So, special characteristic of plants is locomotion. Plants are fixed except for some microscopic form. Bacteria are not fixed, are members of kingdom Plantae. Because in bacteria, the outermost covering is cell wall, so bacteria are placed in the group. Plantae. Individual parts may show movement. प्लांट्स के जो स्पेशलाइज्ड जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं. जैसे ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मूव विद बाय द विंड्स, हवा के द्वारा उनकी शाखाएं क्या करती हैं, घूमती हैं. जैसे सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ सन चेंजेज इट्स पोजीशन. सूर्यमुखी का फूल क्या करता है, सूरज की स्थिति के हिसाब से अपनी स्थितियां क्या करता है, वो चेंज करता रहता है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्लांट्स जनरली क्या है, फिक्स्ड हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये लोकोमोशन वो देखने को मिलती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ Plantae or surface area. Plants have a spread out configuration and large surface area for absorbing maximum sunlight, water and proper gaseous exchange. Next property of members of kingdom Plantae, that is photosynthesis, and it is a very important process found in members of kingdom Plantae, and on this basis they are classified into
special groups, that is autotrophic. So plants are autotrophic. They have the ability to manufacture organic food from inorganic raw material. Plants have the capacity to synthesize their food by themselves by utilization of inorganic raw material such as carbon dioxide from atmosphere, and with the help of water that is absorbed by the root hairs of root by the process of diffusion. And diffusion is of two types. First one is passive diffusion, and second one is active diffusion. So friends, the mode of nutrition in plant is autotrophic. They have the ability to manufacture organic food from inorganic raw material with the help of solar energy. सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग से प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण वो क्या करते हैं, अपने लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं. Autotrophic nutrition of plant is also called holophytic nutrition. दोस्तों holophytic मीन्स ग्रीन प्लांट्स भी क्या करेंगे, ये इंजेस्ट करते हैं. होलो मीन्स इंजेशन, इंजेशन ऑफ रॉ फूड मटेरियल from outside, as like animals are called as holozoic. क्योंकि जंतु जो होते हैं वो होलोजोइक कहलाते हैं, इसलिए कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं. वी नो दैट देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. पोषण के जो 5 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंजेशन ऑफ फूड, सेकेंड वन इज डाइजेशन ऑफ फूड, एंड थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज digestion of food. So friends, like animals, plants although have the capacity to ingest inorganic raw material from outer side of the world. In other words, you can say that plants absorb carbon dioxide from external environment, and they ingest carbon dioxide. They ingest carbon dioxide with the small pores present in the leaves of plants. The pores inside the leaves is called stomata, and there are special types of pores found in the stems of green plant, and these pores are called as lenticels, and क्या हो गया है, कैसा ले रहा है. इसका ऑनलाइन पैसा मिलता होगा. हाँ.
थोड़ा बंद किया है क्या ये? So friends, mode of nutrition in plants is autotrophic because plant prepare their food with the help of process photosynthesis. And you know that photosynthesis is a process by which green plants prepare their food by themselves by utilization of carbon dioxide from external environment and with the help of water that absorb by their roots from the ground. Hmm. हाँ? क्या करें? अब हर एक बत्ती काम कराना। ये बताओ कि कहाँ पर अभी हैं? जरूर करके जब रिश्ते तो लगा है बत्ती बड़ा दे। बात में दिमाग एकदम खराब करके रखा है। लाइट तो सही है ना। हेलो 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 दयाल दयाल हाँ अरे पैसा डाल ले लगा Green plants. The reserve food material is present in the form of starch and oil, and in members of kingdom of plantae, no special sense organs and nervous system are found. There is absence of special irritability to external stimuli, but it is found in some lower plants. For example, हेलो हेलो हाँ और इधर तरफ ठीक है रख बहुत ही रखी चलो बात नहीं रखा चलो हाँ ठीक है
In Mimosa pudica, it is the scientific name of a plant that is called chuimui. This plant have the special इतना लात मारो तो चलता नहीं क्यों है गड़ा जब देखो फोन काटो नहीं specific property जमीन दे दो to show अम्मी दे irritability अम्मी के दे on अम्मी के दे touching the plant. In members of animals of kingdom Plantae, excretory organs are not found. और The plants have a special type of cell structure. राबती ना मजा Plant cells are bounded by a rigid cell wall जंगल चालू करी पूछ and a central sap vacuole occur in mature cells, and in plants आओ क्या कर मेरे this vacuole is larger in size, so vacuole pushes the cytoplasm to the periphery, and a centrosome that is takes part in the process of cell division. In plant it is absent, and cell contains plastids. Inorganic crystals are often present. In plant, asexual mode of reproduction occurs by the process of vegetative propagation and by spores. पौधों में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन की प्रक्रिया होती है वो मिलती है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में के अंदर ये जो है बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड फाउंड इन लोअर ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ प्लांट्स. Sexual reproduction requires the assistance of external agency like wind, water, and insects. And in plant, the sexual organ is a flower. The flower has two types of reproductive organ. First one is male reproductive organ, and second one is a female reproductive organ. In angiospermic plant or gymnospermic plant, the flower have the four circle, that is a calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Calyx and corolla is called the accessory organs of the reproduction in plant, and androecium and gynoecium is called the essential components of reproductive part in plants. So friends, with the help of external agencies such as wind, water, insects, birds, and butterflies in plants, the process of pollination takes place. Pollination is the process of transportation of male gametes to the gynoecium of plant. पौधे में पुष्प में विभिन्न बाहरी एजेंसियों की सहायता से पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम से या स्टामेन्स के एंथर से मैच्योर पोलेन ग्रेन्स का जो है गाइनोसियम के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया जो कहलाती है वो पोलिनेशन होती है. So friends, we will this topic in later in the chapter reproduction.
Here I am explaining you about the characteristics of members of kingdom plenty. Now I shall provide you the important features of members of kingdom Animalia. So we'll take so I will describe you the kingdom Animalia. Kingdom Animalia. We will see the characters of members of kingdom Animalia, the character in glimpse. The kingdom contains all the animals. The kingdom contains all the animals. Animals are generally characterized by characterized by ingestive type of nutrition. Ingestive type of nutrition and locomotion. Friends, जिस तरह से आपने देखा कि मैक्सिमम प्लांट्स आर फिक्स्ड एट ए पॉइंट and but animals are always in locomotive phase, and mode of nutrition in plant in animal is ingestive type. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन का इंजेशन या क्या हो रहा है, भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है. वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. सम एनिमल्स एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस by the process of diffusion, and some absorb by oral route, and some of them absorb by using beaks, कुछ अपने चोंच के द्वारा, कुछ बॉडी के सरफेस के द्वारा, कुछ जो है अपने ओरल कैविटी के द्वारा क्या करते हैं, ठोस रूप में या लिक्विड रूप में फूड मटेरियल को क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं. सो बिकॉज एनिमल्स ingest food material in semi solid or liquid form. So the mode of nutrition, so the mode of intake of food is ingestive type. Mode of intake of food is ingestive type, and organisms are called as holozoic, and this mode of nutrition, this mode of nutrition is
nutrition is called holozoic mode of nutrition. So friends, animals are holozoic mode of nutrition. Members of the kingdom Animalia are members of the kingdom Animalia are protozoans, sponges, coelenterats, platyhelminths, escarpments, annelids, arthropods, insects, starfishes are echinoderms, avies are birds, amphibians, reptiles, and mammals such as rodents and apes, and lastly human beings. Lastly, the human beings. A special feature of group of kingdom Animalia is form, and animals have a regular form. Animals have a regular form and a definite symmetry in animals especially organs are internal. Next property in members of kingdom of Animalia. Next property in members of kingdom Animalia is growth. Growth is limited and does not taking place throughout the life. Not taking place throughout the life. Growth is diffused. Growth is diffused. Growing points are absent in animals. Growing points are
upset. Next property is locomotion. Animals move about bodily. Animals move about bodily from one place to another. From one place to another in search of food and in search of food and other necessities of life. Their body part also show their body parts also show quick movement. It is due to presence of muscles. It is due to presence of muscles. Animals have a compact body. Animals have a compact body with small surface area. With small surface area. Animals obtain organic food from outside. Animals obtain organic food from outside prepared by plants by the process of photosynthesis. Process of photosynthesis. Nutrition is holozoic type. Nutrition in animal is holozoic type. Reserve food is present in the form of glycogen and fat. Sensory organs and nervous system are present. Sensory organs and nervous system are present. They make animals aware of their surroundings. They make animals aware of their surrounding. Animals are quick to respond to various stimuli.
animals are quick to respond to various stimuli. The cell structure of animal cell. The cellular structure of animal cell. The cellular structure of animal cell. A cell wall is absent. A cell wall is absent. Small vacuoles occur. Small vacuoles occur instead of a large central vacuole. Centrosome or central apparatus occurs. Centrosome or central apparatus present, which helps in division of nuclear material. In animal cell, plastids are absent. In animal cells, plastids are absent. Inorganic crystals do not occur. Inorganic crystals do not occur. Mode of asexual reproduction. Mode of asexual reproduction is absent in higher form. Mode of asexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental. Sexual reproduction. Asexual reproduction is present only in some lower groups. Means sexual reproduction is taking place between different strains of organism which shows the differences in external
morphology or shows the differences in formation of gametes. In members of kingdom Animalia, in the members of kingdom Animalia, parental care is found. Parental care is present in which parents provide to their offspring food and shelter and protection. And we will see some objections which are raised in Tokekadam mode of classification. So friends, this link we shall study in my next video program. Friends, today I will finish my live class because here is a problem of supply of electricity. You know that nowadays there is hartal by workers of Bijli Vibhag. So friends, I am going to finish my today's chapter, and friends, we will again meet tomorrow at 6:30 p.m. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल थोड़ी सी नेटवर्किंग की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। हम अपने एक्सपर्ट को लगाए हुए हैं, वो अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर कट मटेरियल प्रोवाइड करा सके। अभी थोड़ी विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी। अगर कोई विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप चैट के माध्यम से, दोस्तों, आप अपनी समस्याओं को, जैसे कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो उसको आप चैट के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर 9793892235, my mobile number is my contact number. My contact number is 9793892235. इस पे आप या मेरे YouTube पे आप अपना कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब कमेंट आता है और आपसे डायरेक्टली बात होती है तो फिर पढ़ाई का वास्तव में आनंद आता है। तो आप निश्चित तौर पे आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़े। तो दोस्तों, आज की टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, और कल हम लोग पुनः एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ हम अपने एक्सपर्टर्स की वो देखेंगे
कल करीब ध्यान दीजिएगा कि 3 बजे के आसपास हम टेस्टिंग कराएंगे। तो आप अपने मोबाइल के सामने जब आप बैठ जाएंगे और आप हमें बताएंगे कि विजिबिलिटी किस स्तर पे क्लियर कट आ रही है, तो उसको हम हमेशा के लिए उस पॉइंट पे कैमरे को सेट करेंगे ताकि ये विजिबिलिटी आप तक क्लियर कट पहुँचे। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आज की विजिबिलिटी भी थोड़ी अच्छी थोड़ी ब्लर होगी, लेकिन साउंड की क्वालिटी अच्छी ही जा रही होगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी या तो 12th बोर्ड के प्रोडक्ट होंगे या आप सभी नीट प्रिपरेटर्स, क्योंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म ही स्पेशली फॉर नीटर्स है। और अभी तो हम 2 ईयर बेस्ड प्रोग्राम में कक्षा क्लास 11th के सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि हम 3 दिन जो है क्लास 11th के सिलेबस को और 3 दिन जो है क्लास 12th के सिलेबस को। तो दोस्तों मेरा आप शेड्यूल्ड आप नोट कर लें। मेरा जो शेड्यूल्ड है टाइम टेबल, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आता है जब हम क्या करते हैं, एक प्लान्ड वे में चलते हैं। तो हमारा प्लान रहेगा संडे टू वेडनेसडे 6:30 to 8:30 क्लास 11th and Thursday to Saturday 6:30 to 8:30 क्लास 12। फ्रेंड्स हम लोग अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ी स्पीड नहीं बन पा रही है। अभी जैसे ही हम एक आप चैप्टर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे, एमसीक्यूज पे जब आएंगे, तो वास्तव में पढ़ने का बहुत ही आनंद आएगा। सो फ्रेंड्स आप मेरे इस प्लान को नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये मेरी ये जो टीचिंग व्यवस्था है लाइव प्रोग्राम की, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव क्लास में जुड़ें और मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स thanks for joining with me in my live video class. Once again you are provided. Thanks.